Okay, hi students. The new chapter we are going to start, that is height and distance. Actually, it is known as application of trigonometry. Means whatever properties, whatever formulas, whatever the things we see in trigonometry, same we have to apply here. बस वही उसको यहाँ पे apply करना है. But before that, we will just see the basic concepts कि exactly this height and distance. In your book, it is the chapter is height and distance in CBSE, and in a state board, the name of the chapter is application of trigonometry. तो पहले हम लोग उसको देखते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है इसमें. ओके, सो आई थिंक सो. Just a minute, I am sharing the screen and I will explain you. Okay, so the chapter is height and distance, or it is known as application of trigonometry. So here basically two angles are there. The chapter total, the whole chapter is based on two angles, two types of angles. अब ये दो टाइप के एंगल कौन से है, जस्ट हम लोग देखते हैं. So suppose a person who is standing on at the ground level, नीचे खड़ा है, and maybe there is a vertical tower or there is some cloud or some person is standing at some particular height. Okay, when someone is here at A, and whenever any person is standing at this person, this is a P, the person standing on the ground level, means he is at the bottom, and someone at particular height. So whenever the person observe from ground level to the top of the building or wherever, तो उसको देखने की, this is known as the line of sight. This is known as the line of sight. Sight means वो देखने की उसके direction. The line of sight that is from the bottom to top, नीचे से ऊपर देख रहा है वो. So that time whatever the angle is formed at the ground level, this angle is known as angle of elevation. Okay, this angle is known as angle of elevation. कहां से देख रहा है? From bottom to top. Okay, so और हमारे पास यहाँ पे क्या क्या रहेगा? मे बी द विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे. वी फॉर्म वन ट्रायंगल, मे बी हियर 90 डिग्री दिस बी. बस पहले इतना ही समझना, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. द वन मोर एंगल इज फॉर्म, that is known as angle of depression. अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन एग्जैक्टली इसके उल्टा होगा. द एंगल ऑफ स्पेलिंग इज, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब यहां पे क्या होगा? द थिंग्स चेंज व्हेन अ पर्सन एट अ पर्टिकुलर हाइट, कहां पे तो खड़ा है कोई, आइदर एट द टॉप ऑफ द लाइट हाउस और मे बी द टेरेस ऑफ बिल्डिंग, कहीं पे तो एक बंदा खड़ा है. एंड वेन एवर ही ऑब्जर्व द एनी वन कार और एनी पर्सन, कोई तो एक नीचे खड़ा है ग्राउंड लेवल पे. सो दैट टाइम वॉट एवर द एंगल इज फॉर्म, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. बट इसमें थोड़ा चेंजेस है. मे द पर्सन इज एट हियर, so the angle is formed from top to bottom, that is known as angle of depression. But angle of depression जब भी होता है, so that time first we have to draw a parallel line to the ground surface. एक लाइन हम लोग ने बनाई. This line is parallel to the ground surface. So this line and this line is parallel. Then afterward
we have to join this top and this ground. So these become a transversal. So students, whatever this angle is formed, this is the angle of depression. This is known as angle of depression. And this is known as downside observing. So this is the line of sight. So students, here line of sight is from bottom to top, and यहाँ पे line of sight है from top to bottom. Okay. So this is theta. Then we know that if the two parallel line and one transversal, suppose here E, here B. So the alternate angles are formed. Angle EAP is equal to angle APB. These angles are alternate angles. So this angle theta. So therefore angle APB also theta. So this angle is theta now. Okay, now with the help of this remaining values we have to find. I think so यहाँ तक आपको सबको समझ में आया. Now और इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? Whatever things ये चैप्टर में हमें चाहिए एक पेज पे हम लोग पहले ले लेते हैं. We have to find हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे? We have to find and we have to know the values of sin theta. That sin theta is equal to is known as opposite side upon hypotenuse. इन सम बुक दिस अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोला गया है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर साइड. ओके, अब ये परपेंडिकुलर साइड कौन सी है ये भी तो डिफिकल्ट है, किसी बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है. सो इफ वन दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड सपोज एंगल सी इज थीटा, एक्यूट एंगल. सो अपोजिट of the C के अपोजिट या थीटा के अपोजिट whatever, this is known as the opposite side. Whatever opposite to 90 degree, that one is known as the hypotenuse, and the remaining is known as adjacent side. अभी साइन आ गया, then we have to know about the cos theta. Formula is cos theta is adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side को कहीं कहीं पे base बोला गया है, it is known as base also. And then next one is the tan theta. Tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. Okay. और क्या याद रखना है हमें? And we have to keep in mind the measurement of the angles. कौन कौन से मेजरमेंट है अभी चेक करते हैं हम लोग. See, we have to keep in mind the table which contain the values. हमें सिर्फ तीन चीजों की वैल्यू रखनी है, साइन, कॉस एंड टैन. रिमेनिंग उसका रेसिप्रोकल होता है, हमें पता है. तो वन इज फॉर द एंगल्स, देन द 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, देन 60 and then 90 degree. Okay. Then here x, here we have to write sine, then cos, then tan. Here 0 degree, then 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. स्टूडेंट्स तुम्हें सिर्फ ना साइन की एक वैल्यू लर्न करोगे तो रिमेनिंग सब तुम्हें आ जाएगा. देखो कैसे. साइन, द वैल्यूज ऑफ साइन इज ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर. साइन 0 is 0, साइन 30 is 1/2, साइन 45 is 1/√2, साइन 60 is √3/2, and साइन 90 is 1. नाउ साइन हो गया, देन कॉस एग्जैक्टली इसके अपोजिट है, रिवर्स होता है. वट एवर द वैल्यू ऑफ साइन 90, दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0, तो कॉस 0 बिकम 1. Whatever value of sin 60, same value of cos 30, that is √3/2. तुम लोग देखोगे एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है. Then sin 45 and cos 45 same, 1/√2. Then sin 30 and cos 60 same, 1/2.
and this 0 and this one is 0. Again we know previous chapter में हम लोग ने देखा था identity tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Correct? अब दोनों को डिवाइड करो, you will get the value of tan. So tan is equal to sin upon cos. Tan 0 means 0 upon 1, the value is 0. 1 by 2 upon root 3 by 2 become 1 by root 3. 1 by root 2 into 1 by root 2 upon 1 by root 2 become 1. Root 3 by 2 and 1 by root 2 2 cancel, it become root 3, and this value is not defined. So this is the basic of this chapter. अगर ये आ गया तो पूरा चैप्टर आ गया. Okay, let's start the exercise. First sum. I think so. First sum we solved yesterday. Correct, Sanidhya? The second one, the screen is visible? Yes, sir. Screen is Yes, visible? sir. Okay. Yes, sir. Then from the top of a cliff, 50-meter high. The cliff is 50-meter high. The angle of depression of a buoy is 30 degree. Calculate the nearest meter, the distance of the buoy from the foot of the cliff. ये हमारे सामने कंडीशन है. So based on this, just draw diagram. पहले डायग्राम ड्रॉ करो, देन रिमेनिंग काम इजी हो जाएगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो वी नो दैट अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास है, देन वी हैव टू ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस. डिप्रेशन में हमें ग्राउंड लेवल एंड जो अपर पार्ट है उसके लिए हमें लाइन पैरेलल लाइंस होनी चाहिए. ओके, एंड फ्रॉम हियर one point. Okay, so this is A, this is B, 90 degree, this one is C, and just give this point is D. Okay, see this one is the angle of depression, and this angle of depression is 30 degree, so this one is of 30 degree. So this diagram हम लोग ने ड्रॉ की ना, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? So we have to write let AB be the cliff है, and C be the buoy. Okay, now based on this हमें करना है. Then remaining, the cliff is 50-meter high, means this one AB, that is a 50 meter. Now based on this information हम लोग ने देखा था whenever the angle of depression is there हमें alternate angle लेने होते हैं. So we know that ये डायग्राम नहीं थी तो हम लोग को ये करना पड़ेगा, that AD is parallel to BC. This one is a parallel BC. Then alternate angles, angle DAC is equal to angle ACB. These angles are alternate angles. Then DAC, just see this DAC. This one is 30 degree already given, so therefore ACB also 30 degree. Now angle ACB become the 30 degree. अब ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री. ओके, नाउ यू हैव द ट्रायंगल. अब देखो क्या करना है. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द buoy फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ. मींस क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड दिस BC. अब BC फाइंड आउट करना, चेक करेंगे द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री गिवन, 30 के अपोजिट में 50 है, एंड वी हैव टू फाइंड एडजेसेंट. ओके, और ये किस में आता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इट इज इन tan. सो हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड AB अपॉन एडजेसेंट साइड BC. द वैल्यू ऑफ tan 30 फर्स्ट पेज में लिखा है. क्या था tan 30? 1 by
root 3. Screen is visible, everyone? Yes, screen is visible. Okay, Hemal. So tan 30, the value of tan 30 is 1 by root 3. Value of AB is 50. Value of BC not given, we have to find. Then just cross multiply. Therefore, BC is equal to 50 into root 3. And the value of root 3 given, यहाँ पे दिया हुआ है, take root 3 is equal to 1.732. So whenever given, that time only we have to take the value 1.732. So this 0 is as it is. 5 to the 10, 1 carry. 5 3 the 15 and 1 16, 1 carry. 5 7 the 35 and 1 36, 3 carry. 5 1 the 5 and 3, 8. So it is 86600. But there are 3 decimal places. यहाँ पे 3 decimal place है ना 1.732 में. तो यहाँ पे भी 3 decimal place आएंगे. From back side 1 2 3. So your answer is 86.6 meter. But the question is that यहाँ पे दिया है calculate nearest meter. Nearest meter means you have to convert into whole number. So therefore BC is equal to 86.6. So decimal place is 5 or more than 5. So omit that one and increase the previous number by 1. So it is become 87 meter. So this is a word problem. So we have to write in statement the distance of the BOI from the foot of the cliff is equal to 87 meter. समझ में आ रहा है? अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग, अनम्यूट करके बोल सकते हो. सानिध्य, रुद्र, हेमल एंड प्रेम. यस सर. तो तुम्हें ये लिखना है कि स्क्रीनशॉट ले लोगे? यू वांट टू राइट और टेक स्क्रीनशॉट, या मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा. इफ यू टेक द स्क्रीनशॉट दैट बिकम इजी. बाद में ना लेक्चर होने के बाद तुम लोग बाद में बैठ के लिख लो तो फटाफट रिवीजन हो जाएगी. इज इट? हाँ हेमल. ओके, टेक द Yes, स्क्रीनशॉट. sir. टेक द स्क्रीनशॉट. 3 2 1 टेक. Sir, लिया. ओके, सो जैसे सम होगा आई विल वेट फॉर अ मिनट. टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर बाद में उसको सॉल्व कर लेना. हाँ, Okay, sir. जितने ज्यादा होंगे उतने करेंगे. एंड मे बी तुम्हारा अभी यहाँ पे ना ब्राह्मणवाड़ी वाले ब्रांच के बच्चों को बहुत सारे सम्स हो चुके हैं. सो मे बी क्या हो सकता है ना, ऑलमोस्ट वी कंप्लीटेड 25. अगर कल मैं ऑनलाइन लेक्चर रखता हूँ, कल वहां पे किसी का लेक्चर है क्या? आई विल चेक. अगर किसी का लेक्चर नहीं है, इधर केमिस्ट्री और बायो या किसी का पोर्शन नहीं कंप्लीट करना है, देन आई विल टेक ऑनलाइन ओनली. सुबह मैसेज आएगा, घर पे आते सुबह मैसेज देख लेना. ओके, ठीक है, चलो. गोइंग टू रब दिस वन. या तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, बाद में तुम लोग को ना ये पूरा व्हाइट बोर्ड का ये भेज दूंगा. दैट इज इजी बेटा. चलो. Yes, students. Now the next question is a vertical pole is 12 meter high. The length of its shadow is 12 root 3. What is the angle of elevation of the sun? Angle of elevation of sun हमें find out करना है. So the question is a vertical pole is 12 meter high. So the vertical pole, that one is a 12 meter. This is a vertical pole. And the next point is given its shadow. The shadow of this pole is 12 root 3. This is the shadow. And we have to find angle of elevation of the sun.
सन का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड आउट करना है. ओके, मे बी द सन दैट वन इज द बैक साइड ऑफ द पोल. सो इसको मैंने एक्सटेंड किया. मे बी हियर समवेयर सन इज देयर. यहाँ पे कहीं पे तो सन है. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड the angle of elevation of the sun. So angle of elevation of the sun and angle of elevation of the pole, that is one and same only. So this is a pole, just P O, this is pole, and this is a shadow, that one is a S. So just write, let PO be the pole and SO be its shadow. Okay, now this is the angle of elevation. This is the angle of elevation for the pole also and as well as for the sun also. तो दोनों में से कोई भी एक फाइंड आउट करो, दोनों हो जाएंगे. So the height of the vertical pole is 12 meter and the height of the is its shadow, that one is a 12 root 3 meter. Again students, what is given? Compare, always you have to compare, या तुम्हें चेक करना है द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द गिवन साइड्स. सो ये एंगल के अपोजिट इज गिवन एज वेल एज एडजेसेंट इज गिवन. एंड अपोजिट एंड एडजेसेंट किस में आता है? tan में आता है. सो जस्ट टेक tan थीटा is equal to opposite side, that is PO, upon adjacent side, that is SO. So tan theta, the value of this is 12, the value of this one is a 12 root 3. Now न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 12 है, सो 12 वन जा 12 वन जा. सो द वैल्यू देयर फोर tan थीटा is equal to numerator contain 1, denominator contain root 3 into 1 root 3. Now we have to find the angle. अभी हम लोग ने देखा था tan के टेबल में 1 by root 3 वैल्यू किसकी आती है? किसकी आती है tan के टेबल में 1 by root 3? tan 30. So in the place of 1 by root 3, in the place of 1 by root 3, we have to write tan 30 degree. Now both side tan tan, so no need to write tan in next. We have to find the angle. तो आ गया. Therefore theta is equal to 30 degree. ये हमें find out करना था. But this is a word problem. So therefore, what to find? The angle of elevation of the sun. So therefore, the angle of elevation of the sun is equal to 30 degree. Understood? समझ में आया? Just give me a thumb. रुद्र, रुद्र तो एकदम एक्सपर्ट है यार. चलो, okay students, so the next question, a kite, interesting question है. A kite is flying with a thread of 80 meter long. Okay, always in this type of questions यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ही बनने वाला है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दूसरा कुछ नहीं बनने वाला. A kite is flying with a thread of 80 meter long. If the thread is assumed straight and makes an angle of 60 degree with the horizontal, यानी बॉटम में हो रहा है मीन्स एलिवेशन है. फाइंड हाइट ऑफ द काइट अबोव द ग्राउंड. काइट की हाइट फाइंड आउट करनी. नाउ हियर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि अरे यार राइट एंगल ट्रायंगल तो बना दिया हम लोग ने. चलो ठीक है, अब काइट है तो काइट एकदम बुलेट के जैसे स्ट्रेट तो नहीं जाने वाली वर्टिकल. काइट इज गो स्लांट, लिटिल बिट स्लांट. ओके, सो तो ये काइट है. सपोज दिस के इज अ काइट, दिस इज ए एंड बी, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल मींस ग्राउंड सरफेस. सो इसकी थ्रेड कौन सी होगी? दिस बी के इज अ थ्रेड ऑफ काइट 80 मीटर, क्योंकि काइट तो ऐसे ही जाती है ना स्लांट इसमें.
इट विल बी नॉट हॉरिजेंटल, वो बुलेट नहीं कि स्ट्रेट जाएगी काइट. सो दिस इज अ काइट and it makes the angle 60 degree with the horizontal. 60 degree बना रहे हैं आप, 60 degree. And we have to find, हमें क्या फाइंड आउट करना, हाइट. एंड हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, मीन्स वी हैव टू फाइंड के. एंड व्हाट इज गिवन, हाइपोटेनस दिया है, तो अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है. हाइपोटेनस दिया है तो किस में आता है ये, अपोजिट अपॉन हाइपो, इट इज इन साइन. बट उसके पहले हम लोग को स्टेटमेंट लिखने हैं, लेट के बी द काइट एंड बी के बी इट्स, क्या दिया है इसकी, थ्रेड दी है. ओके, थ्रेड. नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द काइट. तो क्या करना है, वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. एंड काइट ये ऐसे जा रही है, दिस फ्लाइंग लाइक दिस वे. सो जस्ट वी हैव टू यूज साइन. तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज अ के ए एंड हाइपोटेनियस दैट इज अ बी के. तो वैल्यू ऑफ साइन 60 क्या थी, साइन 60 दैट इज √3/2. अगर आपको याद होगा तो यू हैव टू लर्न दिस वन. के नॉट गिवन and the value of bk is 80. Now 80 is at denominator, whenever it shift that side it multiply. So √3 into 80 divided by 2 is equal to ka. So 2 ones are 240 is. So therefore ka is equal to 40√3. ओके मीटर. नाउ चेक इन दिस सम. अब ये पर्टिकुलर सम में √3 की वैल्यू नहीं दी है. इन एग्जामिनेशन ऑल्सो सपोज द वैल्यू ऑफ √3 गिवन, देन ओनली वो वैल्यू पुट अप करो. अगर वैल्यू नहीं दी है तो नो नीड टू पुट. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द काइट अबोव ग्राउंड लेवल is equal to 40√3 meter. So students keep in mind, if the value of √3 given तो ही put up करो, और if the question asks find the answer up to 1 decimal place 2 decimal place तो ही √3 की वैल्यू पुट अप करो. अगर दोनों में से कुछ भी नहीं दिया है तो नो नीड टू पुट अप द वैल्यू ऑफ √3. जो आया आंसर वैसे के वैसे ही रखो. अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ रहा है प्रेम, समझते? हाँ। ओके. रुद्र, सानिध्य, हेमल. 5 5 10 तक लेता हूं मैं, जितने होंगे उतने. ओके, आराम से करता हूं, कोई घाई नहीं है. तुम लोगों को जब भी नहीं समझ में आएगा जस्ट अनम्यूट एंड आस्क. ओके, चलो. ओके स्टूडेंट्स, वी विल जंप to next question. Question 5. The length of the string between a kite and a point of ground is 85. Same sum like the previous one. Now the length of the string is 85. Just draw the diagram first. First one, this is the perpendicular distance. This is the horizontal and this one is a string of kite. Okay. तो हम लोग सेम लेते हैं. This is a kite. This is the B and this one is a A. Okay, so just write let K be the kite and AB, sorry not AB, AB का कोई जरूरत नहीं है, that is a horizontal, and AK be its thread. So the question is the length of the string or thread, that is same only, between the kite and the point of the ground is 85. So this is of 85 meter. अच्छा, यहाँ पे अभी स्ट्रिंग दिया है तो स्ट्रिंग लिखो यार. वॉट एवर गिवन इन सम, सेम चीज लिखनी है, अपने दिमाग कुछ नहीं चलाना है. तो दिस इज द स्ट्रिंग. ओके,
इफ द स्ट्रिंग मेक्स द एंगल थीटा विद द लेवल ग्राउंड, यानी स्ट्रिंग ने क्या किया, एक एंगल बनाया, दैट एंगल इज थीटा, सच दैट tan थीटा, क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ गिवन tan थीटा की वैल्यू दी है, tan थीटा is equal to 15 by 8, 15 by 8 given. Okay, this is the given. How high the kite, यानी again we have to find the height of the kite. काइट की हाइट फाइंड आउट करनी है और ये करना है. नाउ द वैल्यू ऑफ tan थीटा गिवन. ओके, अब ये सॉल्व करने के दो तीन मेथड है, तो हम लोग tan वाली प्रॉपर्टी या 9th स्टैंडर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं इसमें, दैट बिकम इजी. तो स्टूडेंट्स यू नो दैट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 15/8. नाउ थीटा के अपोजिट में क्या है, दिस इज द अपोजिट साइड and this one is the adjacent side. Okay, so opposite side is KB and adjacent side is AB, so this become 15/8. Now this 15/8 is a ratio, it is not 15 exact value, so therefore let KB be 15x and AB be 8x. Now this become 8 and this become 15. अब क्या करना है, then we will use the Pythagoras theorem. कैसे का यूज करेंगे, see this is the diagram you have. एक फिर से रफ डायग्राम बनाई मैंने, के बी ए. ओके, एंड क्या क्या वैल्यू हमारे पास, वी हैव दिस वन इज 85, दिस वन इज 15x, करेक्ट, के बी, एंड दिस वन इज ऑफ 8x, एंड दिस वन इज 90 degree. So we will use here Pythagoras theorem. Pythagoras theorem यूज करना है. So in triangle KBA, एंगल B is equal to 90 degree. विदाउट 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम हो ही नहीं सकता है. सो पाइथागोरस थ्योरम में फर्स्ट क्या था, हाइपो स्क्वायर. सो हाइपो इज अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, दैट वन इज ए के. सो देयरफॉर ए के का स्क्वायर एंड देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, जो जो साइड बची वो लिख दो, के बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस theorem. You have to write the reasons in geometry. So value of AK, that one is a 85 ka square. KB, that one is a 15x whole bracket square. 15x whole bracket square. And this one is a 8x whole bracket square. Just put up the value. अभी 85 का स्क्वायर है, उसको वैसे ही रखो, नो नीड टू फाइंड द स्क्वायर, वो कैंसिल होगा बाद में, कैसे होता है देखते हैं. नाउ 15 स्क्वायर वी नो दैट इट इज 225, जो सिंपल है आता है वो लिख दो. This one is of 64x square. The square of 8 is 64, square of x is x square. Square of 15 is 225, square of x is x. Now 85 को 85 रखो. Now 225x and 64x plus है ना x square. तो whenever we add it become 289x square. Okay. Now this 289 and x दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, there is no sign, so therefore multiplication sign. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स. सो 289 व्हेनेवर मल्टीप्लाई, इसको दूसरे साइड शिफ्ट करो, इट बिकम डिवाइड. सो 85 स्क्वायर अपॉन 289 एंड दिस साइड इज एक्स स्क्वायर. नाउ दिस 289 एक्चुअली इट इज द स्क्वायर ऑफ 17. सो 85 स्क्वायर अपॉन 17 स्क्वायर, इन द प्लेस ऑफ 289 हम लोग ने लिखा 17 स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर. सो नाउ each and every term, that one is a square, perfect square, so take the square root. Therefore x is equal to 85 upon 17. Just write taking square root. अगर अभी तुम्हें 17 का टेबल आता है तो 17 1 जा 17, 17 5 जा, so therefore x is equal to 5. x की वैल्यू आ चुकी है 5. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड
क्वेश्चन क्या था? फाइंड द हाइट ऑफ द काइट kb, वी हैव टू फाइंड kb. सो kb की वैल्यू है 15x. So that is 15 into value of x is 5, that is 75 meter. So therefore height of the kite above ground level is equal to 75 meter. Okay, समझ में आया? ओके, विल डू नाउ 6. प्रेम समझ लो, रुद्र. हाँ। ओके, एक मिनट. Okay, so next sum. A vertical tower is 20-meter high. A man is standing at some distance from the tower, knows that the cosine of the angle of elevation of the top of the tower is 0.53. How far is he standing from the foot of the tower? पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो. एंगल ऑफ एलिवेशन है, वी नो. तो पहले क्या करो, एक आराम से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ. देन बाकी की बातें बाद में सोचते क्या करना है. ओके, सो given that a vertical tower is 20-meter high. Tower है तो इसको, this is A, this is B, and this one is the C. So tower that is always vertical na, that AB perpendicular. So this is 20-meter. A man is standing at some distance from the tower, known that the cosine of the angle of elevation of the top of the tower is 0.53, means this angle. Okay, so just write let AB be the tower man and C be the man. एक पर्सन वहां पे खड़ा है. वी हैव टू फाइंड हाउ फॉर इज स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर. मीन्स हमें क्या करना है, बीसी फाइंड आउट करना है. द डिस्टेंस बिटवीन द टॉवर एंड मैन, ये फाइंड आउट करना है बीसी. एंड थीटा गिवन, और यहाँ पे क्या दिया है हमें, कोसाइन मीन्स कॉस. कॉस थीटा इज गिवन 0.53. अब स्टूडेंट से कॉस में अगर हम लोग देखेंगे, कॉस में आता है एडजेसेंट एंड हाइपो आता है. अभी ये लाइक दिस वन हम लोग प्रीवियस सम के जैसे भी कर सकते हैं, या हम लोग अलग मेथड भी यूज कर सकते हैं. वट एवर हमें लगेगा ये इजी, वी कैन डू दैट वन. सो अभी प्रीवियस सम किया था तो वैसे ही करते हैं. कॉस कॉस थीटा, दैट वन इज नोन एज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. 0.53 मीन्स वी कैन राइट 53 अपॉन 100 ऑल्सो. नाउ दिस थीटा ना, थीटा का अपोजिट ऑफ 90 ये होगा हाइपो. दिस बिकम एडजेसेंट साइड एंड दिस बिकम अपोजिट साइड. ओके, so adjacent side is CBC, hypotenuse is AC, and this one is a 53 upon 100. Okay, so the value of BC, let BC be 53x and AC be 100x. Okay, again like in a previous sum हम लोग ने क्या किया था, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था. So in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. So that is AC square is equal to AB square plus BC square. So just write by Pythagoras theorem. So AC that one is 100, 100x whole bracket square
AB that one is a 20 square and BC that one is a 53 square. Okay. Now कुछ तो इस सब में गड़बड़ हो गया लगता है मुझे. This is the sixth one, ना? Okay. So just shift this 53x whole bracket square. Shift that side. So it become 100x whole bracket square minus 53x whole bracket square is equal to 20 square. Now left hand side 100x whole bracket square minus 53x whole bracket square, we can use the identity of a square minus b square, that is a plus b and a minus b. So these become 100x plus 53x and 100x minus 53x, and the square of 20 is 400. Now 100x and 53x become 153x into 100x minus 53x become 47x is equal to 400. Okay. So now 153 and 47 we have to shift that side. X square, x square. This is x square, x into x, x square. And this become 400 upon 153x. Sorry, not x. 153 into 47 at denominator. Okay. So now students, whenever in examination अगर ऐसा प्रॉब्लम फंस जाता है तो करना क्या है? जस्ट डोंट यूज दिस मेथड बिकॉज नाउ दिस बिकम टू मच लेंदी. तो अब क्या करते हैं हम लोग? वी विल नॉट यूज दिस मेथड. ये यहाँ पे रखता हूं. आई विल यूज द अनदर मेथड. एग्जाम में अगर यहाँ पे फंस जाओगे, देखो नाउ द इफ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 400 तो 20 आ जाएगा, बट 153 एंड 47 फाइंड आउट करोगे तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट. तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? सो देर इज अनदर मेथड. अब वो मेथड क्या है वो भी बता देता हूँ. ये मैंने जानबूझ के किया. आई नो कि इससे सम नहीं आने वाला, लेकिन तुम लोग इससे कर, क्योंकि प्रीवियस सम हम लोग ने उस मेथड से किया था. नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.53. नाउ इन ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग ने वैल्यू फाइंड आउट की थी कि बैक साइड ऑफ योर टेक्स्ट बुक द वैल्यूज ऑफ कोसाइन. तो कॉस के टेबल में 0.5300 हमें फाइंड आउट करना है एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल. नाउ कॉस का टेबल मेरे सामने है. नेचुरल कोसाइन 0.5300. तो 5300 नहीं है, बट 5299 इज देयर. 0.5299. सो कॉस थीटा, this is a value of 0.53 means 5300, that one is a cos 58 degree. Okay, and the cos theta is equal to cos 58 degree means theta become 58 degree. Now we have value of theta. Okay, now in this sum only यही हमारा triangle था, this one. So this one is a K B A. This one is a 20 meter. Okay, this is a theta. Yeah, अभी आ चुका है and we have to find AB. Means opposite side we have and adjacent we have to find. Then we have to use tan theta. Correct? So हम लोग tan use करेंगे. Now tan theta is equal to opposite side, that one is a KB, and adjacent side, that is AB. Now tan theta means tan 58 degree, and the value of KB, that one is a 20. Value of AB we have to find. Now tan 58 में value check करो. Tan 58. See again tan 58, that is 1.6003. The value of tan 58 is 1.6003. This is 28 and then this one is of AB.
नाउ क्या करेंगे, AB को शिफ्ट करते ऊपर। नाउ वी विल चेंज द पोजीशंस। किस किसी पोजीशन चेंज करते हैं, AB को शिफ्ट करते ऊपर एंड 1.6003 को नीचे लेके आते हैं। सो AB गोज अपसाइड। AB इज इक्वल टू 20 अपॉन 1.6003। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने तुम लोगों को एक टेबल दिया, दैट इज a reciprocal of फोर फिगर्स, यू हैव दैट वन। अब वो रेसिप्रोकल ऑफ फोर फिगर वाला चाहिए, बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली एवरीवन, यहाँ पे नीचे फिगर देखो कितने, 1 2 3 4 एंड 5, 5 फिगर्स है। तो द लास्ट फिगर को हमें कैंसिल करना है। तो लास्ट फिगर को जब कैंसिल करना होता है, द लास्ट फिगर इज लेस देन 5, डायरेक्टली यू कैन कैंसल। सो ए बी बिकम 20 अपॉन 1.600। अब रेसिप्रोकल ऑफ फोर फिगर से क्या हो जाएगा, तो सम बिकम वेरी इजी। ए बी क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोर फिगर में 20 एज इट इज करो एंड 1.6 की वैल्यू जीरो में चेक करो। सानिध्य, व्हाट इज द वैल्यू? आई डोंट हैव दैट पेज नाउ। यस सर। ये क्लोजेस्ट वन इज वन, ये पॉइंट वन सिक्स। 1.6, वैल्यू ऑफ 1.6 इन कॉलम ऑफ जीरो। हाँ, इट इज 1613 वन। 0.1613। हाँ। 0.161। अच्छा नहीं सर, वन 1.6 की वैल्यू इज ये 0.6250। जस्ट मिनट, हाँ, 0.6250। 6250। यस सर। Okay, so just multiply the 0 of 2 and 0 of 0.062, 5 ka 0, 2 zeros are here. Multiply with 2, 2 5s are 10, 1 carry. 2 2s are 4 and 1 5 and 2 6 are 12. Now students, यहाँ पे decimal place कितने, 1 2 3 4, 4 decimal place from back sides. So answer 1 2 3 4. The answer is 12.5 meter. This is of AB. AB क्या था? It is a distance between man and foot of the tower. तो distance between man and foot of the tower is equal to 12.5. तो स्टूडेंट, दिस मेथड इज इजी, सो दिस मेथड इज रॉन्ग, यानी रॉन्ग नहीं है बट इट इज लेंदी, सो यूज दिस मेथड। सो एग्जाम में यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर इतना बड़ा सम आ गया, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तो ये मेथड शॉर्ट मेथड है, इससे भी तुम लोग सम कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो देर आर लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर्स, बट ना जब हम लोग लॉट ऑफ सम सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट द आइडिया किसमें क्या करना है। हाँ प्रेम, एक सम और करते, एक या दो सम, एंड देन वी विल स्टॉप। ओके, students, next sum diagram is given in textbook. First I will draw the diagram whatever given, and then I will read the sum. Okay, so there is a right angle triangle. This one, this one. This is the diagram. The labeling is, this is A, this one is a B, this one is a C. Question is, at a point on the level ground, the angle of elevation of the top of the tower is theta, such that tan theta is equal to 7 by 12. So, tan theta is equal to 7 by 12. Okay. And this theta is given here. On walking 64 meter toward tower.
कहां से इधर से गया इधर तक, so that one is of 64 meter. This point is D. The angle of elevation is phi, another symbol, Greek symbol. This is a phi. Where the tan phi is 3 by 4, और दिया है उसने tan phi become 3 by 4. Find the height of the tower. बस टॉवर की हाइट फाइंड आउट करनी है, बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है हमें. It's okay. If you observe carefully, there are two right angle triangle. एक है ABD and the another is ABC. So we have to use both and value of CD given. तो क्या करते हैं ऐसे ट्रायंगल जब रहते हैं ना, so do separately draw the diagram. रफ डायग्राम बनाओ पहले. We will take smaller one, that is ABD. This one is a phi. Okay. So इसको मैं ऐसे ही बनाता हूँ. We have to find height of the tower, means AB we have to find AB. So just write let AB be the tower. ये टॉवर है. So just write in triangle. So whenever number of triangles we have to write कि कौन सा हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं हमें पता होना चाहिए. इन ट्रायंगल ABD. So tan, वैल्यू 10 की दी तो 10 ही लेना पड़ेगा. tan phi इज इक्वल टू अपोजिट साइड. थोड़ा लिख लेते हैं यार, बहुत लोग भूल जाते हैं. अपॉन एडजेसेंट. वैल्यू ऑफ tan phi is given 3 by 4. Opposite side is AB, adjacent side is BD. ओके. और हमें AB फाइंड आउट करना है ना, तो क्या करते हैं ना, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ BD विद रिस्पेक्ट टू AB. BD की वैल्यू AB के रिस्पेक्ट में, तो AB गोज अप साइड, BD गया ऊपर, इंटू 3 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंड 4 इंटू AB, क्रॉस मल्टीप्लाई. बट वी हैव टू फाइंड BD ना. So BD is equal to 3 again goes 4AB upon 3. This is the equation number 1. Okay. Then we will use the another triangle. कौन सा ट्रायंगल यूज करते हैं अभी? We'll use the another triangle. That one is a ABC. This is theta. So just write in triangle ABC. Tan theta. Again it is opposite side upon adjacent side. So value of tan theta is 7 by 12. Opposite side is AB and the adjacent side is BC. Okay. So just cross multiply again. 7 into BC is equal to 12 into AB. Okay. Now students, if you observe carefully, ये BC में ना एक पार्ट और है, BC के दो पार्ट है, BC के CD प्लस BD ऐसे दो पार्ट है. So in the place of that हम लोग BC के जगह पे लिखते हैं CD प्लस BD is equal to 12 AB. क्यों लिया ये पॉइंट्स? Because C, D and B, these are the collinear points. 7. But the value of CD given ये कितना है रे? 64 था. So this is 64 plus BD is equal to 12 AB. Okay. Now just multiply this one. 7 into 64. 7 into 4, 28. Okay. 7 4s are 28. 7 6 are 42. 42 and 2, 44. Plus 7 BD. We have to multiply both the value by 7 ना. 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है whenever it outside the bracket. दोनों को मल्टीप्लाई किया is equal to 12 AB. There are two sides but हमें एक ही साइड चाहिए, that is AB. अब करते हैं ना उसको भी. तो 448 plus 7. Now we have value of BD. BD की वैल्यू देखो इक्वेशन 1 में 4AB upon 3. तो यहाँ पे पुट अप करते हो 4AB upon 3. This is the value of BD. कहां से आए वैल्यू? फ्रॉम फर्स्ट. अब क्या करेंगे इधर? पहले तो ब्रैकेट वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. बोर्ड मास बोल के गया ब्रैकेट ओपन करो.
तो 7 4 × 28 AB अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 AB। अब ए बी को एक साइड शिफ्ट करते हैं, 4 4 8 एज इट इज रखते हैं, 12 अपने घर पे ही है, और ये 28 AB अपॉन 3 दूसरे के घर पे जा रहा है तो वो पीछे जाएगा, माइनस प्लस का माइनस होगा, 28 AB अपॉन 3। अब ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट होगा? बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बोथ बाय 3। सो दिस बिकम 4 4 8, 3 से मल्टीप्लाई किया 8 बिकम 36 AB minus 28 AB as it is. Now the denominator become 3. Okay. Now the denominator is same. अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये 3 को पहले उधर शिफ्ट करते हैं। दिस इज 4 4 8 इंटू 3 इज इक्वल टू, नाउ 36 AB minus 28 AB, ABD द वेरिएबल इज सेम, AB तो 36 में से 28 गया, 2 एंड दिस 8, दैट बिकम 8 AB। नाउ 8 इज मल्टीप्लाई विद AB, तो इसको शिफ्ट करो, डिवाइड हो जाएगा, 4 4 8 इंटू 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू AB। नाउ 8 से डिवाइड होता है क्या? 4 48 चेक करते हैं, 8 6 जा 42, 2 बचे, एंड 8 4 जा 28 ना, 28 आता है क्या? नहीं आता, 8 4 जा 32 होता है। सो इट विल बी नॉट डिवाइड बाय 8 बट इट इज डिवाइड बाय 4। तो 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग। मैंने हाँ बोला तो हाँ बोल देते हो सीधा, हाँ टेबल्स अपने को पता नहीं, 2 जा 4 1 जा 4 1 जा 4, अरे ये चला जाता ना। रॉन्ग टेबल मैंने भी बोला और सबने हाँ पे हाँ मिला दी मेरे। सो होता है ऐसे। सो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, बचे 4 एंड 8, एंड 8 6 जा 48, इट बिकम 56। 56 into 3 is equal to AB. Now AB is equal to 3 6 जा 18, 1 carry, 5 3 जा 15 and 116. This is 168 meter. Therefore, height of the tower is equal to 168. Got it? Understood? Yes. So we will stop here only. In next lecture, we will take next some terms. Students, if you have any doubt, तो मुझे आप जो नीचे लिंक दी हुई है वहां पे आप मुझे डाउट्स भेज सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो प्लीज like this channel, subscribe my channel, and please forward this video to your friends and others. Thank you. अरे ये मेरे को YouTube पे डालना है तो इसके लिए मैंने सेंटेंस बोला। ओके, सो ये YouTube पे डाल दूंगा। मे बी व्हाइट बोर्ड का ये कंटेंट हो जाएगा, मैं तुम लोग को सेंड करता हूँ, नहीं मिला तो तुम लोग ने स्क्रीनशॉट किया होगा तो कर लो। कल क्या लेने वाला उसका मैसेज ना सुबह मैडम आपको भेज देंगे। ओके, कल अगर किसी का लेक्चर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, दोनों बैच को कंबाइन करके ऑनलाइन लेक्चर लूंगा। पहले तुम्हारा लेता हूं थोड़ी देर, तुम्हें आगे करता हूं, फिर उनका 1 घंटा ऑनलाइन लेता हूं। ओके, अच्छा परसों कौन सा पेपर है सानिध्य? सर परसों फिजिक्स है। फिजिक्स है ना, यानी कल तो हालत खराब होगी सबकी तो देखता हूँ लेना है कि नहीं लेना है कल। हाँ, 1 आवर के लिए हम लोग ऑनलाइन आ सकते हैं। अगर कल फिर मैं वहां पे ना फिजिक्स के मैडम को ही बोलता हूँ इफ शी इज अवेलेबल, और तुम लोगों को, तुम लोग देखो क्या करना है। हाँ, मैसेज देखो एंड अकॉर्डिंग टू दैट। चलो, ओके बाय। अरे जिसके घर का कोई वोटिंग को गया नहीं भेजो उनको। ओके।